सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये आपको हेल्प करेगा कि आप जब इंक्वायरी करते हो वो है माई की, राइट। उसका जो लास्ट स्टेज होता है वो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। हम जब सब चीज़ को नेगेट करके फाइनल चीज़ तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। थोड़ा सा ये डीप होने वाला है, फिर भी इसके एंड में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। Sir, I admire your actually Sandeep Maheshwari spirituality thing, and I have since my childhood I've always wondered who am I, what am I doing here on earth, who are all these people. I've always inquired about these things, and through your sessions I have also understood that this is this body and there is this mind, but after that I don't know how to move forward. I have heard you say that what sees through me is the same thing that sees through you. So how do we know that what consciousness through me is the same as consciousness through you? How can we understand that? You are right now sitting in Karnataka, right? Yes. I am in Delhi. So the water in your body, is it different from water in my body? It's the same. It's the same. It's the same. Is there इसको मैं एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसा सर ने कहा कि वाटर मेरी बॉडी में आपकी बॉडी में सेम है, राइट। इसी तरीके से अगर एग्जांपल के थ्रू समझे, फॉर एग्जांपल मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होते हैं, राइट। लेकिन उस बर्तन, सब बर्तन में जो उसका सब्सटेंस है, मतलब वो बर्तन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्यू टू मिट्टी, राइट। अगर मिट्टी है तभी वो बर्तन एग्जिस्ट करेंगे, अगर मिट्टी नहीं है तो बर्तन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो उसका जो सब्सटेंस है मिट्टी, वो सब में सेम है, राइट। कोई भी बर्तन हो सकता है, बड़ा छोटा, लेकिन उन सब में जो कॉमन सब्सटेंस है वो है मिट्टी, राइट। तो इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें ह्यूमंस के साथ, ये हमारे में भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, बहुत सारे फॉर्म है ह्यूमंस के, बहुत सारे लोग हैं, राइट। लेकिन सबकी जो बॉडी है उसका जो मूल सब्सटेंस है जिसमें से वो क्रिएट हुई है वो सेम है, राइट। उसी को हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले, तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। any doubt about it? No doubt. No doubt, right? Water is water. It's not your water or my water. So how come the consciousness be yours or mine? Consciousness is consciousness. The content of consciousness is different. Okay. The content of राइट, इसके ऊपर भी मैंने बात की है, कॉन्शियसनेस क्या होती है और कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, राइट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। your consciousness, which we call as memory, the memory in your brain is based upon the experiences and the knowledge that you have acquired over your lifetime, which is different from my knowledge and my experience. So the memory in this brain is different from memory in your brain. So from the content perspective, we can call it there is a difference. But और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है मुझ में और आप में। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो एट द लेवल ऑफ मेमोरी। मेमोरी अलग है, इसका मतलब नॉलेज से अलग है, और इसका मतलब जो भी मैं लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं वो अलग अलग है, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि मैं तुमसे अलग हूँ, राइट। मेरे और आप में डिफरेंस है। तो इसी चीज को समझना है इस क्वेश्चन में, इसी चीज को सबसे पहले रियलाइज करना है कि मेमोरी, एट द लेवल ऑफ मेमोरी, सिर्फ यही एक डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे ह्यूमंस के बीच में, राइट। और कोई भी डिफरेंस नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। consciousness is not different. For example, there is a light which is illuminating your body and there is a light which is illuminating my body. So these bodies are different, but the light is the same. Is there a difference in light? Is the light in Bangalore different from the light in Delhi? The source is the same, which is electricity, and electricity is electricity. It's not Bangalore electricity or Delhi electricity. The difference is जो भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी सेम, बर्तन अलग अलग है, लेकिन मिट्टी सेम, मतलब जो सब्सटेंस है वो सेम है। not in consciousness, because consciousness is everywhere. This is what needs to be understood properly. Consciousness does not come and go. For example, if we take out the eyes from a particular body, that body can no longer be conscious of the sight. But the consciousness is still there. Because if we put back the eyes again from some other person in that body, because now the science has evolved up to such an extent that we can do all these things. We can play with all these things, right? We can take out the eyes and we can put back the eyes. It's not as if we are changing the consciousness. Consciousness is still there, untouched.
So consciousness is always untouched. Consciousness is the very ground of all this. Like consciousness is the very essence of this universe. Can we call the same thing as God? Is that itself God? That's a different concept altogether. One concept of God is that there is somebody who is more powerful than us, who looks like a human being, right? That is one concept. But the actual concept of God is the material of the whole universe, which is consciousness. So consciousness is not different from the essence of this universe. You're getting where I'm coming from. So our mind always thinks in duality. We think that these materials are different and consciousness is something else. It is not something else. We think that living is something else and non-living is something else. It is not something else. It is one whole movement. जो भी हमने बात की ना अभी, मैं जो बार बार कहता है सब्सटेंस, ये क्या है? मैटर का पार्ट हुआ, और कॉन्शियसनेस है क्या, राइट? मैटर और कॉन्शियसनेस। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। मैटर जो मतलब जो मूल जो सब्सटेंस जिसमें से ये सब क्रिएट हुआ है, उसमें और कॉन्शियसनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। Yes. Okay. Without this universe, where is consciousness? And without consciousness, where is this universe? Oh. Without non-living elements in your body, where is the living? Without living, can we talk about non-living? No. So it is all interconnected and interdependent. One block. This is one block. It is not two separate things. At the level of our mind, we create this division between the two. Between living and non-living. Between God and somebody who is not God. You are God. Everybody is God. Who is not God? What is God? For example, from a river's point of view, without water there is no river. There is no bubble. There is no wave. Right? So we can call the God of that river is water. So you are made of that water. But we are calling ourselves as a bubble. This is enlightenment. We think that enlightenment is basically some mystical experience. Right. We will sit. एनलाइटनमेंट मीन्स कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो इस वक्त मतलब सही नहीं है उसको सही बनाना, राइट? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर चेंज आता है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, और कोई भी चेंज नहीं आता, राइट? जैसी आपकी लाइफ चल रही थी वैसी ही चलेगी, सिर्फ एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज आता है। कौन सा? जैसा सर ने कहा कि ये समझना कि मैं सिर्फ एक बबल नहीं हूँ, लेकिन बबल जिसका बना है वाटर, वही मैं हूँ, राइट? और पानी सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पर पानी, जहाँ जहाँ भी पानी है वो सब मैं हूँ, राइट? इसी चीज को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। Somewhere under a tree for some days or some hours or whatever, and we'll get an experience and then we'll become enlightened. It's not that. Enlightenment means just to see things as it is. But Gautama Buddha experience something, I don't know what it is, but maybe because people have seen them, they go into that ecstatic moment and they are in that for hours together, days together. Sir, what do we make of that? I mean, I don't mean to be in that state, but then when people see that happening, going into that ecstatic state and being in bliss and everything, is that something that it's a hallucination? We ourselves, I don't want to put you in any controversies and things. No, that's okay, that's okay. So what we need to understand is the kind of experience that you're talking about. Yes, there is an experience. But the point is, your mind thinks that it's very difficult to experience it. That's a trap. Because what needs to be experienced is, it's here, it's now, which is beyond your senses. You don't have to perceive it through your senses. You can't perceive it through your senses, but it's there. Is that sound of silence, sir? When we close our ears? Exactly. See, I will be very more, what my understanding of sound of silence, I will just share with you. When I close my ears, I hear this same sound. Right. Any time of the day, night, but there is no other, other than just one stream, keeps on going any time, and it is very loud, evident when it is quiet. When it is, of course, during daytimes, you can't hear it, of course. Is that the same thing that they are also experiencing, sir? That is the same reality which all the Vedas and all the Upanishads and all the religious scriptures are talking about. Everybody is pointing towards the same reality. So whatever the definition of God is that is there in your mind, that you have read it from somewhere, don't ask somebody to explain it to you. Just read it somewhere in any book and now relate it to the sound of silence. You will get all the answers. Okay. It's always there. It's beyond time.
It's beyond space. Always there. These bodies will come and go, but it's always there. It was there before the creation of this planet, it will always be there. That is the supreme reality. There is no experience there for that matter. Whatever we call as experience, it's basically through the senses. That's what you call as experience. क्योंकि हम एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, जो भी हमें सेंसेस के थ्रू परसीव होता है उसको, बट ये क्या है, बियॉन्ड सेंसेस। मतलब बट हम साउंड ऑफ साइलेंस को कैसे परसीव करते हैं, बियॉन्ड सेंसेस, राइट। ये सेंसेस के बियॉन्ड है, इसलिए इसको हम एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, राइट। When we give a name or we put a label onto that experience, we call that as knowledge. So it's beyond experience, it's beyond knowledge. Because it's not through your senses, it's not in your memory. The sound of silence is not coming through your memory. It's there, it's the reality. It's more real than whatever you are perceiving through your senses. Because whatever you are perceiving through your senses can be questioned. But the sound of silence can't be questioned. Because we are not perceiving it through the senses. You can close your ears, it's still there. Still there, yes. Yeah. And I have... It can't be killed. You must have read somewhere, fire cannot burn it. Any weapon cannot kill it. So just think, what is there in this universe that can't be killed by any of the weapons, that can't be burnt by fire, because everything can be burned by fire. Fire can burn everything, except the sound of silence. राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है एंड में जब हम OMI की इंक्वायरी करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि मैटर मतलब जो उसका जो मूल सब्सटेंस है और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हम कैसे समझे कि ये दोनों एक है। आई होप कि इसमें वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हुआ। लेकिन फिर भी कोई भी क्लियर डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।